Assalamu alaikum, dear viewers. You are welcome again. In this lesson, we will discuss two more modal auxiliary verbs, must and ought. We will discuss their form, structure, and uses. First of all, we will discuss must. Like other modal verbs, this must has also a negative form, must not. Mustn't इसकी contracted negative form है mustn't. Must, must not, mustn't. बाकी auxiliary verbs की तरह बाकी modals की तरह this modal is also used with all pronouns, with all persons, without changing its shape. For example, I must go, he must go, she must go, we must go, you must go, they must go. नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम must के बाद not लगाते हैं. I must not go, he must not go, she must not go, we must not go, you must not go, they must not go. इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम must को ही सेंटेंस में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब आता है. must I go, must he go, must she go, must we go, must you go, must they go. mustn't जो उसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म है ये रेयरली इस्तेमाल होता है. यूजुअली वो यूज must not. Now let us discuss some of its uses. First of all, it is used for obligation. ये हमने इससे पहले भी कई मोड्स के साथ पढ़ा है, but here must is used for strong obligation. When something is very necessary, when something is very important, we use must. You must answer all of the questions. I must go to bank to get some money. You must show your pass before you enter the building. ये पहला यूज है, वो यूज दिस for obligation, for strong obligations. The second use of this must is necessity. When something is very important, when something is very necessary, you are looking sick, you must see a doctor. You are looking sick, you must see a doctor. Second example, you must work hard, you must improve your spelling, you must get up early. This is necessity. First use obligation, then the second use is necessity. Then we use this must for advice or recommendation also. You must not leave the gate open. You simply must see that film. I must ask you not to do that again. You must read this book. You must read this book. This is advice or recommendation. We use must for both advice or recommendation. Now the fourth use of this is drawing a conclusion. किसी चीज़ का नतीजा निकालना, consequence जिसको हम कहते हैं. You must be hungry after your long walk. We conclude that the consequence of your long walk is that you must be hungry. You must be hungry after your long walk. She must be having a lot of problems with the language. We conclude something from. Third one, they must be twins. They must be twins. Fourth one, she must have left already. She must have left already. Fourth one. Fifth one, living in such crowded conditions must be difficult. To draw a conclusion, we also use must. Now the last one, that is this must is used as a noun also. For example, his novel is a must. Is a must for all lovers of fiction. His novel is a must for all lovers of fiction. Second one, this movie is a must for head teachers. This movie is a must for head teachers. Here must is used as noun, so this must is also used as a noun.
Now let us discuss another modal auxiliary verb, that is ought. Ought. Usually this ought, ये जो है, ये जो modal auxiliary verb है, it is followed by to, so it is named ought to also. इसकी नेगेटिव फॉर्म भी है ought not to, oughtn't, उसकी contracted नेगेटिव फॉर्म है, but this is rarely used. We simply use ought not. Ought to, ought not to, oughtn't. This is a semi-modal verb. This is not full modal verb जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है. What is the difference between full modals and these semi-modal verbs? This is also used with all pronouns without changing its form. That means we do not need do, did, does to make it negative or interrogative, क्योंकि उसकी एक नेगेटिव फॉर्म भी है. इंट्रोगेटिव के लिए हम उसको सेंटेंस में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है इसका. I ought to do more exercise. I ought to do more exercise. He ought to do more exercise. She ought to do more exercise. We ought to do more exercise. They ought to do more exercise. नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल यही फॉर्म इस्तेमाल होती है, और सिर्फ नॉट हम ought के बाद इस्तेमाल करते हैं. I ought not to do more exercise. He ought not to do more exercise. She ought not to do more exercise. We ought not to do more exercise. You ought not to do more exercise. They ought not to do more exercise. इंट्रागेटिव को बनाने के लिए हम ought को पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं. Ought I, ought I ought I to do more exercise, ought he to do more exercise, ought she to do more exercise, ought we to do more exercise, ought you to do more exercise, ought they to do more exercise. Note of interrogation भी लास्ट में लगता है इसमें. दिस इज़ द स्ट्रक्चर, किस तरह हम इससे फॉर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. इसकी नेगेटिव फॉर्म भी है ought not to, उसकी contracted फॉर्म भी है oughtn't, but this is not used, rarely used. This is a semi-modal verb because this is usually followed by this to. ये अकेले इस्तेमाल नहीं होता है ought, और इसीलिए उसको semi-modal auxiliary verb कहा जाता है. Now let us see some of the uses of this ought. moral obligation ये इस्तेमाल होता है. फर्स्ट यूज जो है इसका, इट इज़ यूज फॉर moral obligation. You ought to say you are sorry. इखलाकी फ़र्ज जो हमारा बनता है, moral जो हमारा that shows our morality. You ought to say you are sorry. Such things ought not to be allowed. They ought not to let their dog run on the road. We ought to love our neighbors. We ought to help him. We ought to know better. This is the first use. पहला यूज जो हम जिसके लिए हम ought को इस्तेमाल करते हैं, वो जिसको हम इखलाकी फ़र्ज कहते हैं, जो हमारे इखलाकी फ़र्ज होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम ought को इस्तेमाल करते हैं. बट here it follows, it is followed by to. उसके बाद to आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. सेकंड जो यूज़ है इसका, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस और रिकमेंडेशन. वी आर टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी आर टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. They ought to have more parks in the city. We ought to have locked the gate. Past के लिए भी इस्तेमाल होता है. We ought to leave now. You ought to listen carefully. This is the second use. It is used for advice or recommendation. किसी को नसीहत करनी हो, किसी को कोई रिकमेंड कर सलाह देनी हो, उसके लिए भी ये हम इस्तेमाल
करते हैं. नाउ द थर्ड वन दैट इज ड्राइंग ए टेंटेटिव कंक्लूजन. टेंटेटिव कंक्लूजन एक तो है परफेक्ट कंक्लूजन जो बिल्कुल होता है, वही दिस इज ए टेंटेटिव कंक्लूजन. ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है ऐसा. ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसी को हम टेंटेटिव कंक्लूजन कहते हैं. शी आट टू बी हियर बाय नाउ. उसको यहाँ होना चाहिए था बट शी इज नॉट हियर. शी आट टू बी हियर नाउ. द जर्नी आट टू टेक अबाउट 2 hours. 2 घंटे लगने चाहिए बट इट टुक मोर. ज़्यादा टाइम लग गया. इसके लिए भी हम ought इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग ए टेंटेटिव कंक्लूजन. फोर्थ यूज ऑफ इट इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट. जब हमें कभी अफसोस होता है उसके लिए भी हम ought इस्तेमाल करते हैं. आई ought टू हैव स्पोकन अप अर्लियर. काश मैंने पहले ही ये बता दिया होता. आई एम सॉरी. यू ought टू हैव ऑफर टू हेल्प. आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी. दे ought टू हैव टोल्ड अस व्हाट टू एक्सपेक्ट. उनको उन्हें हमें पहले ही बताना चाहिए था कि हम क्या चाहते हैं. They ought to have told us what to expect. One important difference here is ought to is similar to should. बिल्कुल should की इस ought और should में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट इज़ मच लेस फ्रिक्वेंट. लेकिन हम should ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू ought. इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है बट वी यूज शुड फॉर पास्ट आल्सो. ये हमने पढ़ा है इससे पहले. इट इज़ रियरली यूज्ड इन क्वेश्चन इन नेगेटिव्स. नेगेटिव और क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought. Let me repeat again what this ought is used for. It is used to express moral obligation. It is used for advice or recommendation. It is used for drawing a tentative conclusion. It is used for regret. It is used in this present and future tense. And it is rarely used in questions and negative sentences. This is all about this ought and must. Goodbye.